मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनके करीबी मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर निजी लाभ के लिए बराक घाटी का दोहन करने का आरोप लगाया है। गोगोई ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनके करीबी मंत्री बराक घाटी को एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। काटीगढ़ा बदरपुर को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त गेमन ब्रिज का दौरा करने के बाद गोगोई ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इस क्षेत्र का इस्तेमाल एटीएम के रूप में किया जा रहा है। गोगोई ने कहा कि कोयला, पत्थर, सुपारी और चूना पत्थर से लदे ओवरलोड ट्रकों की तस्करी पुल के जरिए की जा रही है, जिससे पुल को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने गेमन ब्रिज के जीर्णोद्धार और तस्करी के गिरोह की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह अवैध गतिविधि बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि तस्करी राज्य की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गई है। गोगोई ने इस मुद्दे को हल करने में कथित विफलता के लिए गेमन ब्रिज की मरम्मत के लिए जिम्मेदार NHIDCL की भी आलोचना की। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि तस्करी राज्य की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गई है। NHIDCL काम माने उत्तर पूर्वांचल आटाइतকৈ दुर्भाग्यजनक। কিয়নো NHIDCL এটা বিশেষ কোম্পানী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে হৈছে, বেলেগ ৰাজ্যত আমি দেখা পোৱা নাই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেখিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ কাম একদম মানে নিম্ন স্তৰৰ, ল' কোৱালিটি। যোৰহাটৰ ভিতৰতো একে, ইয়াতো আমি একে দেখা পাইছোঁ। 6-7 মাহ লাগিলে তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিবলৈ। তেওঁলোকে এতিয়া নিজে কৈছে যে ইয়াত লোড, এইখন ব্ৰিজৰ ওপৰত লোড বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে 2016 চনৰ য'ত তেওঁলোকে ৰিপেয়াৰ কাম কৰিলে আকৌ তাত কৰিবলগীয়া আছে। কিনো লোড বাঢ়িলে? 2016 চনৰ পিছত কাৰ চৰকাৰ আহিলে অসমত? বিজেপি চৰকাৰ। কি লোড বাঢ়িলে ইয়াত? কিমান লোড বাঢ়িছে? আৰু লোডটো কাৰ? মানুহটো নহয়, গাড়ী নহয়, এয়া হ'ল ডাম্পাৰ ট্ৰাকৰ, কয়লা ট্ৰাকৰ, লাইমষ্টন মাফিয়াৰ। ইয়াৰ কাৰণে আজি এই গোটেই ইয়াৰ এটা নেশ্যনেল হাইৱে কাম এতিয়া মেৰামতি কৰিবলৈ হৈছে। মানে ইয়াত ইমান কয়লা আৰু লাইমষ্টনৰ ইয়াত অহা যোৱা ট্ৰাকৰ কাম হৈছে। নিশ্চয় এই ট্ৰাকবোৰ অভাৰলোডিং। কাৰ ৰেছপনচিবিলিটি? ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰি আছে? গৃহ বিভাগে কি কৰি আছে? গৃহ বিভাগৰ কাম এইবোৰ চব ধৰিবলৈ নহয় নেকি? গৃহ বিভাগ কাৰ দায়িত্ব আছে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তো গোটেই বৰাক আজি উপত্যকাটো তেওঁলোকে বৰাক ভেলী তেওঁলোকে এটা ATM দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা পইচা ল'ব লাগে, কয়লাৰ পৰা পইচা ল'ব লাগে, লাইমষ্টনৰ পৰা পইচা ল'ব লাগে, চুপাৰীৰ পৰা পইচা ল'ব লাগে। এই বিজেপি দলে যেতিয়াৰ পৰা 2016 চনত আহিছে, কয়লা, বালি, চুপাৰী আৰু লাইমষ্টনৰ মাফিয়া যোগেদি বৰাক ভেলীক